Hello students, in this video we will find steady state current as well as transient current for this given RLC series circuit where a sinusoidal input voltage is applied. A switch is given which is closed at time t is equals to 0. So we will find here steady state current at t less than 0 just prior to switching, and at t greater than 0 we will find this transient current. So we will see here how to find steady state current at time t less than 0. At t less than 0 this switch is open, so RLC, everyone is part of our circuit. Now we can find the current by applying this formula V by Z. Here V is our sinusoidal input, which is 100 sin omega t, and our impedance is summation of all of them, that is plus j 314 minus j 6000 ohm. Okay, so summation of these j terms will give us minus j 5686. Okay, now write them in polar format. So here the angle is, phase angle is 0, so it is nothing but 100 angle 0 degree, and convert this into a polar. So this will give us, by squaring these two terms and taking root, will give us 5686.88, and angle, by dividing this term by this term and taking tan inverse, we will find the value, that is minus 1.4 degree. Okay, so our steady state current we can calculate by solving this, and this is 0.018, and angle is 0 minus 1.4, that is 1.4 degree. Okay, this is in polar format. We can write it in time domain also, and that will be 0.018 sin omega t plus 1.4 degree. What is this omega? This is angular frequency of our signal, which is 314. So this is our steady state current. Okay, with the help of this current we can find the value of I0, or you can say IL0 and VC0, which is nothing but initial conditions. So prior to switching, what current flows through inductor is IL0, and that is I0 also. Okay, so this current we can get by putting t is equals to 0 in this equation. So this is 0.018 multiplied by sine 1.4 degree, and that is equals to 0.0004 amperes. Okay, this is our first initial condition. Our second initial condition, that is voltage drop across this capacitor while current I0 is flowing at time t less than 0. Okay, we know that at 0 minus whatever current flows, that will remain same at t is equals to 0 plus also. These are the time just prior to switching and just after the switching. Similarly, the voltage just prior to switching and just after the switching remains same across this capacitor. So VC0 is voltage drop due to this current. This is current is I can write it like this: I0 multiplied by whatever the reactance, that is 6000. So it is equals to minus, since it is minus, so it is minus 2.4 volts. This is VC0. So in this way we can get the values of two initial conditions, which we will use here in finding the transient current equation.
Now we come to the next part of our question, that is transient current. Transient current we will calculate at t greater than 0. At t greater than 0, circuit will look like this. V, L and C now will be the part of our circuit. तो इसके लिए सबसे पहले KVL लिखेंगे. Writing KVL, that is V. Our V is this 100 sin omega t is equals to L di by dt plus 1 by C integrating I dt. Okay, this is voltage drop across inductor and this is across capacitor. तो ये हमारी जो इक्वेशन है इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, so that we can remove this integration sign. L d2I by dt square plus I by C. Okay. अब हमारी जो ट्रांजिएंट करंट है, इट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ टू करंट्स. एक है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा है पर्टिकुलर फंक्शन. इसकी हेल्प से हम निकालेंगे ट्रांजिएंट करंट. ओके, दिस इज अवर ट्रांजिएंट करंट. तो जो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये हमारा इस पार्ट से आता है और पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट पोर्शन के इसी फॉर्मेट में हम लिख के फाइंड आउट करेंगे. तो ये जो है हमारा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d2 बाय dt स्क्वायर को हम इसे लिख सकते हैं d स्क्वायर. ओके, एंड दिस विल बिकम अवर L इज इंडक्टेंस, दैट इज 1, C इज 53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. ये हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको हम इक्वल टू 0 लिख के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे. 53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. ओके, ये जो राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसकी हेल्प से हमें मिलेगा ICF. ओके, ये जो ICF वाला पार्ट है वो मिल जाएगा. तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D स्क्वायर इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू प्लस माइनस J 137.36. क्योंकि देखिए यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और माइनस का जब हम रूट लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा. तो हमारा जो CF है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा CF है वो हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स, ICF जो है वो हो जाएगा हमारा K1 cos 137.360 प्लस K2 sin 137.360. ओके, तो ये हमने जो फैक्टर्स निकाले थे उनकी हेल्प से हमने ICF फाइंड आउट कर लिया. अब हमें ये दोनों फाइंड करने हैं जो हम इनिशियल कंडीशन की हेल्प से फाइंड करेंगे. अब हम देखते हैं IPF क्या होता है. तो IPF जो है वो इस पोर्शन के एनालॉगस इसी तरीके के फॉर्मेट में रहेगा, दैट इज A cos ओमेगा t प्लस B sin ओमेगा t. दिस इज अवर IPF. अब इसको हम A और B भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहीं पे. तो ये जो इक्वेशन है हमारी, इसमें हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करके लिख लें. यहाँ पे 100 ओमेगा cos ओमेगा t इज इक्वल्स टू L d2I by dt स्क्वायर प्लस I by C. ओके, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई विच इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसमें IP लिख लें इस IPF को फॉर कन्वीनियंस. इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी माइनस A ओमेगा एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो IP डबल डैश आ जाएगा, दैट इज ठीक है. तो ये हमारी डबल डिफरेंशिएशन के बाद दो वैल्यूज I सिंगल एंड डबल एंड IP. तो ये वैल्यूज जो है हमारी, इनको हम इस इक्वेशन में इन प्लेस ऑफ दिस I सब्स्टिट्यूट करेंगे. इसको हम क्या लिख लें, ये I है हमारा, ये हमारा I डैश है,
दैट मीन्स डी आई बाय डी टी है, और ये है हमारा डी टू आई बाय डी टी स्क्वायर। इनकी जगह पे हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम आईसीएफ को छोड़ देते हैं, और इनको जब ये यहाँ से इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 ओमेगा कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू एल कितना है 1, ओके, और सी कितना है 53 माइक्रो फैरेड। तो डी टू आई क्या है हमारा दिस मच आई पी डबल डैश, ठीक। और हमारा आई क्या था, आई हमारा जो हमने ए कॉस ओमेगा टी वो लिया था, तो उसको लिख लें हम आई पी, ठीक। तो ये है हमारी, और इसमें हमारा सी भी प्रेजेंट है। तो ये हमने वैल्यूज रख ली। यहाँ पे हमने आई को आई पी डबल डैश, डी टू आई को डी टी स्क्वायर को आई पी डबल डैश लिख लिया, और इसको हमने आई पी लिख लिया, ठीक है। जो आई पी डैश है इट इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर आई पी, ठीक। आई पी डैश जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आई पी ही है। तो इसको हम यहां से आई पी डबल डैश को क्या लिख लें, माइनस ओमेगा स्क्वायर आई पी, ठीक। अब यहां से हम इस इक्वेशन में ये जो आई पी है वो क्या था, हमने क्या एज्यूम किया था आई पी को, आई पी वॉज ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, ये लेके चले थे हम। अब हमारे दोनों साइड हम कॉस के कोफिशिएंट्स को और साइन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ए और बी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा ए क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 100 ओमेगा डिवाइडेड बाय दिस माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/53 इंटू 10 टू द पावर -6। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -0.39, ओके। ए की वैल्यू क्या आएगी -0.39, और बी हमारा आएगा इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन का कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमने आईपीएफ निकाल लिया, दैट इज आईपीएफ क्या हो गया हमारा, ए की वैल्यू ये है -0.39 कॉस ओमेगा टी प्लस बी की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो ये है हमारा आईपीएफ, ठीक। अब हम K1 और K2 कांस्टेंट्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिख लें, IT हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ये ट्रांजिएंट इक्वेशन का, दैट इज नथिंग बट ICF प्लस IPF, ठीक। तो इन दोनों के समेशन को ही ICF प्लस IPF को ही IT और ट्रांजिएंट करंट कहते हैं, ठीक। यही हमारा ट्रांजिएंट करंट है। तो हमारा ट्रांजिएंट करंट जो है IT वो इन दोनों का समेशन है, ठीक। IT इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ओके। So here we got the complete solution or transient current IT, that is here in this equation form, okay. Now we will find the value of these two constants K1 and K2. For this we will put the RT is equals to 0 in this equation, and here we will get K1, this term will become 0 minus 0.39, okay. This is nothing but our initial condition I0, because I0 is equals to I0 plus, and that is also equals to I0 minus. At the 3 state current remains same in case of inductor and capacitor. At t is equals to 0 time, or t is equals just after the switching or just prior to switching. At these 3 times capacitor and inductor doesn't change its status. तो आपकी यहाँ पे I0
current रहेगी that we already calculated, that is 0.004. Okay, by this equation we can calculate the value of K1, which is equals to 0.39. Okay, to find the another constant, we will differentiate this complete solution. Suppose this equation is equation number B. Okay, and this is our equation A. These two equations play very important role in finding the transient current. This is equation that we got by applying KVL at t greater than 0. Okay, so differentiate this equation of transient current with respect to t. We will get K1. Differentiation of this cos will give minus sine. Suppose this coefficient is n, so write down sine nt multiplied by n. Again differentiate this. This is plus k2 n cos nt, and third term is minus 0.39, but after differentiation it will become plus 0.39 sine omega t. Okay, this is di by dt. So we can find the value of di by dt at t is equals to 0 by this equation. Okay, by this equation number A. Here this is the voltage drop across inductor and this is voltage drop across capacitor. Just after switching at t greater than 0, this equation is written. Just after switching, the voltage drop at capacitor remains as it was in its initial condition. So it is nothing but Vc 0 minus. We already calculated Vc 0 minus, and that is equals to minus 2.4 volts. So replace this voltage by minus 2.4 volts. This at t is equals to 0, this will become 0. Okay, so by this equation L is nothing but 1 Henry. So here we can find the value of di by dt at 0 is equals to plus 2.4 volts. Okay, so put t is equals to 0 and di by dt is equals 0 is equals to 2.4. Put t is equals to 0 in this whole equation. We will get, this is k1, this sine 0 will become 0 is equals to k2, this is n, cos 0 is 1, this is again 0, sine 0 because of sine 0. So this is the value we will get. Substitute or replace this n by 137.36. Here we can get the value of K2. K2 is equal to 2.4 divided by 137.36, which is equals to 0.018. So our second constant is 0.018. So replace this K2 by 0.018 and this K1 by 0.39, and we can get the complete solution or transient current of the given circuit. This is our complete solution, okay, of the given circuit. Okay, so this is the way to find the transient current in any AC circuit using the complementary function and particular function of the current, and so this is the way to solve the so in this way we can find the transient current or complete solution of RLC circuit, of AC RLC circuit. So
So in this way we can find the transient current in this given RLC series circuit where sinusoidal input is applied as input source voltage. Thank you. So in this way we can find the transient current in transient current in RLC series circuit where sinusoidal input is applied.